सोनू भैया वेलकम, स्वागत, राधे राधे। लाइक कर दिया है, हाँ मिल गई। और कैसे हो? मैं इतनी देर से यहीं बैठी हूँ, देख भी नहीं रही हूँ। कहाँ थे इतने दिन तक? प्लीज लाइक कर दीजिए। कहाँ थे इतने दिन से? सोनू भैया बात करिए, कमेंट बाद में करिए। एक काव्या, जाके वहाँ उस रूम में देखो मोबाइल। काव्या, उस रूम में जाओ, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा। जाओ। सोनू भैया मैं कुछ पूछ रही थी, कहाँ थे आप? हम ठीक ना है। का भा है? क्या हुआ है आपको? दिल्ली का धुआं लग गया? हॉस्पिटल में है, अच्छा क्या हुआ है भैया? बाद में बोलिएगा। तबीयत ठीक नहीं है हमारा, आप बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भैया, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है आपको? अंदर मत करो ना, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करो। अनन्या को थोड़ी कैची है, तो काटे तो इसको। लाओ हमें दो। मेरे गोडाउन फिर जलन है। अब देखो चला। आपके गोडाउन में जलन होती है? मेरी मम्मी के पैर में गर्मी में होती है, भी नहीं होती है, गर्मी में होती है। बुखार नहीं उतर रहा। चिरायता पी लो। चिरायता खौला के पियो भैया। बाय 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 बाय। चलो ठीक है, तबीयत नहीं सही तो बाय बाय। 6 लाइक के साथ फोन आया। लेकिन चिरायता पी लो, अगर नहीं पपीता का पाती पियो सोनू भैया, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है। पपीते का पाती भी पियो। ये बोलते नहीं है। हाँ बात कर रहे हैं, देखो लिख नहीं रहे हैं। बुखार नहीं उतर रहा। मेरी आवाज उन तक जा रही है कि क्या बोल रही मैडम? उनको सुनाई दे रहा ना कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लाइक बढ़ रहा है तो मेरे सामने भी आओ भाई। 7 लाइक कौन किया है?
बताई तो मेरी तबीयत सही है। मेरी तबीयत सही है भैया जी। मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। कल करवा चौथ का व्रत है तो मेहंदी लगवा रही हूँ। वेरी गुड। कैसे भूल जाऊंगी भैया। हम भूलती नहीं हूँ। सच बताना। नहीं भूल तो कभी नहीं सकती। जिस दिन मेरा मुनो हो जाएगा फिर भी बात करने के लिए लाइव चलेगी। भूलना तो नामुमकिन है। आप भूल जाओगे लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। वो भी 24 घंटा सोनू भैया करती हूँ तो बहुत मुश्किल है भूलना आपको। नहीं हम भूले नहीं थे भैया। मुझे लग रहा था मैं बोल रही थी एक दिन की पता नहीं क्या हुआ आप आ भी नहीं रहे हो। ऐसे भूल जाऊंगी सबको। तो कैसे बुलाऊं आपको आ जाओ। बढ़िया से बनाना है। पता नहीं जीरो आज पता नहीं कैसे कैसे ना वाचिंग जीरो हो जा रहे। तो अब यार थप्पड़ मारूंगी तेरा फोन बहुत तेज चल रहा। आ जाओ फिर। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया आपको। आज कोई नहीं आया तो आप हमारा हेल्प कर दिए। आज लाइव में कोई नहीं आया क्योंकि कल करवा चौथ है तो सारी औरतें तैयारी में लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।
सच इमोजी का बोलना मैंने। कहाँ आ जाओगे? फिर मत कहना हमसे आपसे पूछना नहीं, इसीलिए पहले ही पूछ रहा हूँ, आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। अच्छा, आज मैं आपको आपको मैं भी सच बता रही हूँ। हमारे यहाँ एक लोग थी, और क्या बोलते, मतलब जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं वैसे वो भी बात कर रही थी अच्छे से। और उन्होंने बुलाया, उन्होंने मिलने चली गई, अयोध्या घाट पे भी गई। और उन्होंने पहले ले गए होटल में, चाय पियाए उनको, चाय पिला के फिर कहाँ ले आए, फिर अयोध्या में ले आए। फिर उसके बाद अयोध्या घाट पे ले गए, उनके साथ हरकतें करने लगे और उस जनानी के साथ। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखाया। मैंने आज देखा था, मैंने पढ़ा भी था, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया कि एक एक जनानी पड़ी है, कितनी बेवकूफ है कि कैसे चली जाती हैं, पता नहीं घर के गार्जियन बिना मिलने उनसे कैसे चली गई। अगर मिलना है तो अपने हस्बैंड के साथ जाओ। तो हम आपसे मिलेंगे, अपने हस्बैंड के साथ मिलेंगे, ससुर के साथ मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सोनू भैया। थैंक यू सोनू भैया। अगर होता तो मैं आती, मैं भी दिल्ली, लेकिन मेरा भाई तो आ गया, दिल्ली से आए गए अब गांव। उन्होंने रिपोर्ट लिखवाया। थैंक यू सोनू भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं ये थोड़ी बोली, मैं तो बोल रही आ जाओ। लेकिन मैं भैया अकेले नहीं मिलूंगी, मैं मिलूंगी तो अपने हस्बैंड के साथ मिलूंगी, किसी को भी। मैं तो आपके साथ है, मजाक कर रहा हूँ, प्लीज। माइंड मत करो। नहीं सुनो भैया, कोई बात नहीं, मैं तो बोल रही ना, मैं तो इसलिए बोल रही, बता भी नहीं। मैं मिलूंगी, किसी से भी मिलूंगी, मुझे मिलने का टेंशन नहीं है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ। मेरे को दुनिया देख देख, फेसबुक देख देख बड़ा डर लगने लगा।
थैंक यू सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी और आपकी बातें कोई सुन रहा है, सुनने के लिए थैंक यू। सोनू भैया ना और क्या पपीता, पपीता की पाती पीना बुखार छोड़ देगा, कैसे भी बुखार आपको होगा। मेरे बहुत था बुखार ना, उस टाइम कहाँ ठीक हो रही थी मैं भी पी करता पीस पीस। अरे बहुत आसान, बहुत बेकार सा लगता था, लेकिन मैं पी लेती थी क्योंकि हाँ उस टाइम ज्यादा तबीयत खराब थी। हमारी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार होती है। तो क्या तुम लोग लड़की अभी से बीमार होना चाहती हो क्या? अभी हमारा सर नया नया है ना, मम्मी थोड़ा वो हो रही है, अब तो होगा बीमारी है कि नहीं। पैर से बड़ी मम्मी परेशान थी, पैर से और दांतों से, तो दांत में बहुत प्रॉब्लम है। थैंक यू सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और कुछ हो तो बता दो सोनू भैया हमको। छुट्टी तो नहीं होगी, ऑफिस में होंगे आप ना? सोनू भैया ऑफिस में होंगे आप ना? हाँ बस बस ऐसे करके इस पे चढ़ाते हैं। कहाँ गए मेरे भाई, कहाँ मस्त हो गए? सोनू भैया बिजी हो गए, कहीं दफ्तर में होंगे ना, ऑफिस में। ये कौन है सोनू भैया आंटी जी? सोनू भैया मेरे भाई हैं। अपने भाई? हाँ मेरे अपने भाई। आएंगे तो देखना।
अभी तो कहीं और है इस टाइम। दिल्ली ना। दिल्ली नहीं है इस टाइम में, बदायूं में। बदायूं सुनी हो? 2000 दिल्ली छत्तीसगढ़ ये सब सुनी हो? यहाँ पे मौसी लड़के हमारे काम करने आए थे। हाँ बहुत अच्छे थे, वो स्वभाव बढ़िया था उसका। हाँ, अच्छे थे। आप कैसे जानती हैं? पापा बोल रहे थे कि स्वभाव ठीक था उसका, उनके घर में सबसे बढ़िया। ऐसे। कहाँ आप काम करते? छत्तीसगढ़ में ना? यहाँ पे आए थे तुमको थोड़ा यहाँ पे काम थोड़ा टफ होता है, तो लोहा वगैरह उनको काम नहीं आता, पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे उनको काम नहीं सेट हुआ, वहाँ छत्तीसगढ़ में अच्छा कमा लेते हैं पैसा। बस उनको ना बिल बना
थैंक यू सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ चले गए थे, कहाँ बिजी? रहने दे काव्या। जैसे मैं बता रही ना, पहले यहाँ से शुरू करो, यहाँ। राधे। अरे नहीं हिलाओ। पकड़ नहीं तो नहीं तो बिगड़ जाएगा मेरा। थैंक यू सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दी काव्या, हाँ पर फिर हम मारे ही लागे, मुझे गुस्सा लागे। जितने दुलार करी थी उतने मरबो करी। नहीं यार, अरे मत हिलाओ। थैंक यू सोनू भैया, इमोजी भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। हाँ। उनकी आ ही नहीं रहा था, उनकी दूसरी मंगाऊं? फंस जाएगा। ए अनन्या। इसमें है तो है अभी, तो नहीं आ नहीं रहा। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। ए अनन्या, ए बेटा, वही अलमारी पे टीवी के पास वो है, मेहंदी एक पैकेट और है, जहाँ पापा की मोबाइल तो वही है, ले आओ। पता नहीं आ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ा दम लग रहा है मेरा। इसको रहने तो छोप लूंगी, इसे पड़ी रहने तो छोप दूंगी। फिर कैसा लगा? बढ़िया लगा। ऐसे करो, निकालो। वो खत्म हो गया। ये थोड़ी से नहीं दे दो। निकले। काकू। हमने बुलाया, आपने बोला नहीं, फिर हमें लगा कि आप चले गए। मैं नहीं, मतलब ये नहीं समझे कि आप चले गए, मुझे लगा ना कि काम में आप व्यस्त हो गए, इसलिए मैं बोल रही। ऐसे बनाना पूरे उंगली में बस, ठीक है। सोनू भैया, मैं सोची ना कि जब देखो, ये अपनी गुलामी नहीं है, अपने घर की फैक्ट्री नहीं है, आप जहाँ काम करते हो, तो मैं सोची कहीं काम में आप व्यस्त हो गए, क्योंकि हम भी कभी कभी फोन करते ना तो बोलते अपने बाप की फैक्ट्री नहीं, जब मर्जी मैं आपसे बात करूं, जब टाइम रहता है फिर मैं आपको कॉल से बात करूंगा, नहीं तो नहीं, तो इसलिए हम सबकी मजबूरी समझते हैं। मुझे लगा कि आप काम में व्यस्त होंगे, इसलिए मैंने नहीं फिर बुलाया, आवाज नहीं लगाया।
आपको नहीं आता, इतना कमेंट कर रहे हो, और कुछ बोलते तो सिखा भी देती। कमेंट करना क्या सिखा दो। अच्छा, मोबाइल देखे पीछे के कमेंट कैसे करते हैं बताइए। इतना बढ़िया कमेंट कर रहे हो और कैसे बताऊं। जाओ अंदर रूम में जाओ, जाओ पापा जो उसके पास। हाँ, भैया वेलकम, स्वागत, राधे राधे। कैसे हो सुरजीत भैया? थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सुरजीत भैया। आप लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस हम नहीं लगाना है, अब ऐसे पांचों में लगा दो। मैं ठीक हूँ, प्रणाम। आप जा रहे हो? ठीक है, पता नहीं इतने लोग थे फिर जीरो वाचिंग क्यों आई। ठीक है दीदी। नामुमकिन है सोनू भैया। थैंक यू सुरजीत भैया। सुरजीत भैया दोनों आईडी से आप लाइक कर देना आज। हाँ, आ तो गए दोनों से। लाइक भी कर देना। हाँ, इसे लगा दो बेटा। थैंक यू, नो लाइक। हाँ, मिल गई सुरजीत भैया, मिल गई। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सुरजीत भैया। हाँ हाँ हाँ, सही बात। थैंक यू सोनू भैया। थैंक यू सुरजीत भैया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ठीक है सुरजीत भैया। सुरजीत भैया कोई बात नहीं, सोनू भैया हमारे कमेंट कर रहे हैं, आप मान लो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। थोड़ा काम कर लो, ठीक है सुरजीत भैया, कर लो। मैं भी तो थोड़ा खाना वाना खा लेती हूँ आपके लाइव में। थैंक यू, दिल से शुक्रिया जी। सब पे भरोसा है भैया, ये ऑनलाइन का काम है, हमें सब पे भरोसा है।
भरोसे के ही साथ दुनिया जी रही है। सोनू भैया सच बताओ ना, आपको बुखार है ना? सच आपकी तबीयत खराब थी? हाँ? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोली पागल। मैं ये नहीं बोली, मैं तो ये बोले कि मतलब वो बोले बुखार है तो मैं इसलिए पूछ रही थी। हाँ तो ये तो बात सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे राम राम, किस लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस करो सोनू भैया, सपना जी कल लाइव की पर शायद। हाँ मैं गई थी कल उनकी लाइव में। और मैंने हाल चाल भी लिया, मैंने बात भी उनसे किया, उनका ऑपरेशन हुआ है सच में। सुजीत भैया। और उन्होंने बोल भी नहीं रही थी, सर हिला रही थी, मैं बोली सर हिला के बात कर लो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बताया। मैं जुड़ा था, हाँ तो आप आ गए तो फिर भी मैं भी उनके पास गई थी। उसके बाद आपके लाइव में आई थी। फिर सपना ने ज्यादा देर नहीं चलाई, थोड़ी देर चलाई थी फिर बंद कर दी थी। हो सकता है इसलिए चलाई हूँ कि कटे ना। मैंने 25 दिन लाइव नहीं की तो मेरा बहुत कटा था ना। तो हो सकता है इसीलिए चलाई हूँ। नाइटी में थी ना। तो लग रहा था कि हाँ उनको मतलब कुछ है, तबीयत खराब है उनकी। आदमी को देखने से पता चल जाता है कि अगले की तबीयत खराब है। मैं जब गया था वही तुरंत जुड़ा। अच्छा अच्छा। लाइव ऑन हुआ था, अच्छा तो मैं गई थी तो लाइव थोड़ी देर, मैंने आधा घंटा थी फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर मैं आ गई। क्योंकि ज्यादा बोल भी नहीं रही थी, फिर मुझे आपके लाइव में जाने के लिए देर हो रही थी। तो मैं इसलिए मैं सोची ना कि ज्यादा रात तक नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं किया? अरे मैं ये नहीं, ए ताबे मोबाइल घिन कर बात बंद कर। अरे सोनू भैया, मैं मजाक की बात नहीं, मैं बोले ना कि आपको सच में बुखार हो तो अगर नहीं ठीक हो रहा, ठीक है सुजीत भैया। अ, मेरी लड़की यही तो बोल रही है कि मम्मी क्या मजाक करेंगे, सच में उनको बुखार है तभी बता रहे हैं। हेलो सुधा जी। तो इसलिए सोनू भैया मैं बोली ना कि आपको ज्यादा बुखार हो तो पपीते की पाती पी लो, पीस के फिर बुखार सही हो जाएगा, इसलिए मैं बोले क्योंकि मेरा भी बहुत तबीयत खराब था। घर में घर की बात नहीं है, मैं पी नहीं रही थी, मम्मी दे रही थी तो मैं भी पी रही थी। एक बात तो सच है सिस्टर, आज के टाइम में किससे सच बोलो तो लोग नहीं मानते, लेकिन अगर झूठ बोलो तो लोग 1 मिनट में विश्वास कर लेते हैं। विश्वास आप कल आपको लगता है मुझे? अरे नहीं, मुझे विश्वास है तबीयत खराब होगी क्योंकि मैं भी आज देख रही थी दिल्ली में है। होगा बुखार, और समय भी चेंज हो रहा है तो बुखार होगा भैया।
आप तो कमेंट करे, मेरे को सच में बुखार रहता तो मैं चुपचाप पड़ी रहती हूँ। थैंक यू विश्वनाथ भैया। तो मैं कैसे पड़ी थी, मैं तो बोल भी नहीं रही थी। आप तो फिर भी कमेंट किए, मेरा इतना हेल्प कर रहे हैं। अनन्या, इसको सही कर दो बेटा। आप जल्दी मेहंदी लगवा लिए। हमसे नहीं हो रहा है। बस बस, गेट तो नहीं खुला बाहर वाला। थैंक यू सुजीत भैया, थैंक यू विजयनाथ भैया, थैंक यू सोनू भैया। आप लोगों को खाना पीना हो गया कि बाकी है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो नहीं। आज मतलब खाना तो बना दी मैंने आज, क्योंकि आज मेहंदी लगवा रही हूँ तो इसलिए खाना बना दी। लेकिन अभी पापा हमारे नहीं आए हैं, तो जब हमारे पापा आएंगे तभी रोटी खाएंगे, उसके बाद मैं रोटी खाती हूँ। ठीक है सुजीत भैया, थैंक यू आने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। खिलाएंगी नहीं, मतलब मैं ही कर दूंगी, सूख जाएगी तो मैं छुड़ा दूंगी। अभी तो पापा लेट आएंगे ना, अभी तो पापा बहुत लेट आएंगे। और मैं म्यूट कर रही हूँ, काव्या मोबाइल देख रही है, क्योंकि मैं मेहंदी लगवा रही हूँ तो काव्या को मोबाइल दी हूँ अपना। कहाँ रोते हो? मैं तो चुपचाप आई हूँ। मेहंदी लगा कौन रहा है? बगल की एक लड़की है, वो लगा रही है। मेरी पड़ोसन है ना। हाँ काजल। काव्या पहले बंद करो। पहले हमारी लड़की भूख लगी है काव्या को। क्या करूँ काव्या तुमको? कौन से हाथ में? कौन से हाथ में? कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में, दाहिने। आ गई।
बाय 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 सुजीत भैया, बाय बाय, कैसे हैं? बाय बाय सुजीत भैया।
बधाई हो बधाई बधाई हो